I always say that a product's uniqueness or the differentiator is what drives the sales strategy. Hello everyone, this is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 2. Today we have with us the fascinating leader of the industry, Mr. Yudhisthir Sharma. Welcome to Sales Maze. So he's a visionary leader with over 2 decades of expertise across diverse industries, including telecom, IT, hospitality, and fintech. So today we have with us Mr. Varun Suri. Mr. Varun Suri is the director of Dr. Morepen Limited, as a visionary leader who has passionately championed the brand's core philosophy, health in your hands. Welcome, Mr. Suri. We have with us Mr. Ashutosh Sharma. Mr. Ashutosh Sharma is the Vice President, Sales and Marketing at Morepen RX, Medicus, Cardiology. A huge experience of 29 years of pharmaceutical companies. We will be talking on Sales Maze, the path to maximize revenues. All of us would like to learn from you, sir, that how can we become more efficient in terms of leadership and how can we close our sales calls more effectively, which can help to drive our business to the level next. So if our business is currently at 95, what is that factor of 5% additional business gain so that we can drive to that 100% mark? Sales, as I look at it, basics remain the same. And when I talk about the basics, I always say that, sales is all about being a driven salesperson. I try to sell ideas, I try to sell thoughts, and I try to sell products and services. I believe you go to any industry, the thought remains the same. It's just the approach or the strategy that changes, and it basically depends on multiple factors. Obviously, the market dynamics, the kind of environment the company is operating in, obviously the geopolitical factors or the macroeconomic factors, and obviously the micro factors as well. If any leader wants the team to perform, they should be able to lead by example. So I always say that designations should be left behind. Ultimately, a salesperson is a salesperson, whether working at a very junior level or at the topmost level. There need to be a strategic focus whenever we are targeting sales. So if I have to kind of break down the strategy part a bit, I would say that the sales goal of any organization or a company should be aligned with the overall business objectives. That's the first and foremost, I would say. Second is obviously understanding the finer nuances of it, which is how do we go about executing it then. Third is the field sales workforce. So it all starts from the top but flows down till the bottom seamlessly, and that's when any organization can actually think about hitting the numbers. I always say that a product's uniqueness or the differentiator is what drives the sales strategy. So you can always have standard off the shelf products, or in your business I would say generic products, and you might have products where you will hold the IPR and you will be able to charge premium for that because you are doing quite a lot of R&D and innovation in developing the product. But obviously the differentiator has to be there. Even if it's a generic product, there has to be some differentiator. What would be that differentiator? That differentiator could be the kind of services that you offer apart from the product. Sales is again all about perseverance and patience. It's not just about feeling that, oh, I work for Morepen, we are a known name. I would go to the market and I will find the customer and the customer would buy it, or I'll visit the doctors or I visit the chemist and they would take the product. No, each sale should be approached very, very methodically, with a lot of energy, a lot of aggression, as if it's your first sale. And same goes for the field people. Whenever they are on
daily calls, I would say that they should be able to get into a zone where they are able to consider each call as their first call. The key takeaway for me was relationship building, and relationship building, as I look at it, is paying me still. So even for salespeople, I relate it to that. Trust is important. It's not about visiting a doctor or a chemist, telling them that you'll get the product you just give us the order, you'll get the product in 3 days, and not really knowing whether the warehouse has got the stock or not being realistic. So having possibility of an order is a very, very exciting thing, but at the same time it has to have the backward integration with the inventory management system, with how the warehouse works, and the operations, or I would rather use the term sales operations, should be so seamless that while taking the order, if the salesperson is making a commitment, it's a commitment on behalf of the brand. It's not just for one customer, because something that you do positive, it takes long time to spread. But something where you falter because of any reason whatsoever, it could be some very, very I would say legitimate reason also, but the customer won't understand it. So that is, winning the trust of the customer is important. Being customer centric, being absolutely close to the customer, which is as a salesperson or as somebody who headed the business, I used to barge in the calls, these sales calls. Sometimes when we had limited number of agents, because we were a small team, we were a startup, and I was available, I would end up taking the customers' calls, just to understand what is that customer wants. Are we even close to that? Are we developing a product or a service which is even coming close to what the customer requirement is, or what the market requirement is? So that relates to innovation. The more we innovate, the more we improvise on our product, and the more inward looking we are in terms of taking the feedback, incorporating the feedback, I think better we do in terms of clocking the sales. So no, I would say hard and fast formula to achieve sales, but I always say that do the basics right, stay close to the customer, innovate. Do not just believe that you're going to give the product to the customer and now the money is in your pocket. I say that 80-20 rule. You try 100 people, 20 only will show interest, 80 will straight away say no. That doesn't mean that it's not a sale. We'll come to that, and I'll explain why I consider that would be a sale. 20 would say yes, and out of 20 you would follow up properly. Only one would end up buying your product or placing the order, which means that you have to motivate yourself. You need to have that drive to reach out to the customers, and do not take it on your chin. Do not consider that the customer said no to me. No, the 80 who have said no now, if you keep that relationship and that communication channel open, then they would recall. The moment they'll have a need for the product, they would recall that, okay, Yudhisthir has been following up. Let me give him a small chance. Maybe it would be a small order, but you will at least end up converting one customer. When people are in sales, when people are making targets, usually it's April or financial year, that's also the time of appraisals. So is it because of the appraisals that during the targets wo zero easily lag jate hain targets mein? I would say that when you know what you're doing and when you understand it in and out, that helps in building your confidence, which means that you'll be able to tell very clearly to the management that, hey, your expectation is here. No, we can't do. Realistic. That's what I say in my words. Smart. Something which is measurable, realistic, achievable, and obviously time bound.
the answer to your question is that yes, sales people, they do that. बट डू यू थिंक सेल्स कैन वर्क इन साइलो, और सेल्स को बाकी डिपार्टमेंट की जरूरत है? आई मीन फिलोसफिकली यू विल से नहीं जरूरत है, इट इज अ टीम वर्क, बट नहीं, 100% ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल भी देता हूँ। आपने किसी से ऑर्डर लिया, अभी आप उसको माल कब उठाने देंगे? आप उसको या तो आप ऑन अप्रूवल पे स्टॉक देंगे, तो ऑन अप्रूवल के लिए भी आपको चालान बनाना पड़ेगा, विच मीन्स कि इन्वॉइसिंग टीम इमीडिएटली उसमें आ गई, लूप में आ गई। तो अगर सेल्स वाला इन्वॉइसिंग टीम वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता और केवल ये मान के चलता है कि मैं ही धंधा लाके दे रहा हूँ कंपनी को, तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो गलत सोच रहा है। वो काम इफेक्टिवली कस्टमर को डील ही तब कर पा रहा है जब उसको इन्वॉइसिंग डिपार्टमेंट सपोर्ट दे रहा है। सिमिलरली किसी कस्टमर के लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ था, अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स बताएगा ही नहीं कि इसका नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर में जब आप एक दूसरे के साथ में रिको करने बैठेंगे, कस्टमर रिको रिक्वेस्ट करेगा, जो कि कस्टमर्स करते हैं, तो हो सकता है छोटा व्यापारी जो है वो आपसे धंधा करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी बुक्स में उसके 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए 20,000 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको ईगो इशू बना लेगा। सिमिलरली मार्केटिंग फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज you need to provide some literature around the products to customers as well, because that's how you are visible to the end user. End user may not come to you directly and buy the product, but ultimately if the marketing department is not doing its role properly, then the sales won't be able to do anything. If the salesperson thinks that I'm the one man army and I'll offload all the products to the customer just because I am a good salesperson, then they need to go and see their face in the mirror. नो, आप क्या हमारी लीडरशिप टीम को बताना चाहेंगे, बिकॉज हमारी पूरी लीडरशिप टीम यहाँ पे है, कि क्या आपको लगता है कि व्हाट लीडर्स नीड टू ड्राइव टू ब्रिंग बिजनेस इन प्लेस? वहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? मैं मतलब स्ट्रेट अवे इनवर्ड लुकिंग होने से पहले मैं मैक्रो वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या हम प्राइसिंग में उनसे डिफरेंट हैं, क्या हम सर्विसिंग में उनसे गड़बड़ जा रहे हैं। अगर हमारे उस सब में आंसर ये आते हैं कि वी आर एक्चुअली द बेस्ट, वी आर, और इफ नॉट द बेस्ट, वी आर इक्वली कॉम्पिटिटिव, देन टीम के ऊपर बात आती है। तब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये नई टेरिटरी ओपन करी है हमने जो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो सॉल्यूशन डिफरेंट है। अगर वो एक पुरानी टेरिटरी है और उसमें अचानक से परफॉर्मेंस गिरा है, तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो एज अ बिजनेस पर्सन आई वुड डू, आई वुड इमीडिएटली पुल आउट द डेटा। अगेन सिस्टम्स प्लेस में आ गए, मीन्स एनालिटिक्स यूज़ में आएंगी कि कौन कौन से कस्टमर थे जो पास्ट में जिनकी इन्वॉइसिंग हुई है अब बंद हो गई है। ऑल ज्योग्राफी, मतलब आपको लगता है कि एक जोन में कुछ लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी लीडरशिप को कैसे और अच्छा करना चाहिए और हमारे लीडर्स को क्या करना चाहिए ताकि हमारी एक परफॉर्मेंस सब जगह फैल जाए उसी तरीके से? एक तो ये कि अगर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का लीडर सही नहीं कर रहा, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि क्या वो पहले अच्छा कर रहा था, अब क्या हो गया। कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो अगेन गोज बैक टू कोहेसिवनेस, वेयर ही शुड फील कॉन्फिडेंट कि वो अपने मैनेजर के साथ में कन्फाइड करे, बताए कि मेरे को ये इशू है। और अगर वो बिल्कुल फोकस्ड है फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो शायद एक दूसरी ज्योग्राफी के लीडर से हम बोल सकते हैं कि आप इनको असिस्ट कीजिए। उसमें कोई वो नहीं है, ईगो इशू नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं, ये साहब तो 25 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं और शायद 15 साल वाला हेल्प करने के लिए जा रहा है। कंपटीशन है, सीखो, सिखाओ, और सीनियर भी जूनियर से सीखे और जूनियर भी सीनियर से सीखे, रेस्पेक्ट करके चलो, काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने इश्यूज बताइए। आई एम 100% श्योर कि सारे इश्यूज के सॉल्यूशंस ना तो मैनेजमेंट के पास होंगे, ना जनरली मिलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन 100% मिलेंगे। पहले आप अपने अंदर वो जज्बा लेके आइए कि आप इश्यूज बताएंगे,
अगर आप उनको अपने तक ही रखेंगे और अंदर ही अंदर क्रॉस टॉक करेंगे तो सेल्स में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा. दिस इज व्हाट माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज. Very well said. I think something great. Awesome. Clap for it. और एक अब फील्ड वालों की तरफ से सजेशन ओनली, विच इज गिव देम द टारगेट्स प्लीज. जितना आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए. अग्रीमेंट मीन्स अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि भाई इस क्वार्टर में 200 करोड़ कर दो. वो बोलेंगे 200 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है सर, आप नंबर देखो, हमने पिछले बार केवल 100 करोड़ अचीव किया है. तो आप 2x कर रहे हो इसको. जब आप फाइनली अग्री कर जाएं एक नंबर पर, तब उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव जो ओवरऑल उनके सेल्स स्लैब से अलग हो जरूर रखें, सो दैट दे फील मोर मोटिवेटेड टू अचीव दैट पर्टिकुलर बार. एंड इट कुड बी समथिंग वेरी सिंपल. आई मीन जरूरी नहीं है कि आप उनको कोई, मैंने जो फील किया है कई बार क्या होता है कि एज अ बिजनेस हेड अगर मैंने सेल्स वाले लड़के के साथ में बैठ के चाय भी पी ली है ना, और उसके साथ में एक समोसा भी खा लिया है, तो वो उस चीज़ से भी इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि वो कम से कम उस महीने तो अच्छी सेल करके देगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि somebody at the top is at least listening to me. I'm being heard. Good. So the channel should always be open, and I always say that most of the time it is the communication gaps and that create misunderstandings and misconceptions in any organization. So we should try and eliminate that. Very well. Beautiful. Awesome. Mr. Sir, one more question. In your expertise of being monitoring startups, how can we compete with strong players and how can we become like them? स्मॉल कंपनी केवल इनिशियली अपने टर्नओवर की वजह से स्मॉल होती है. सोच बड़ी होगी तो उसको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता. जो उसकी कोर टीम है उसके अंदर एक शेयर्ड विजन होना चाहिए और एक लीडर आइडेंटिफाइड होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी टसल फॉर लीडरशिप. So what is the importance of technology and AI, and what is the importance of innovation when people get stuck in the market? टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनोवेटिव वेज कुड बी कि लेट्स से मार्केटिंग मटेरियल नहीं है अवेलेबल, तो आपके पास में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई वीडियो भी है आपके पास पुराने कस्टमर के साथ में किसी मीटिंग का, वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए. आपके पास में प्रिंटेड ब्रोशर नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी से वो कॉन्फिडेंस के साथ में कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाइए. और अल्टीमेटली जो सेल होती है ना, वो प्रोडक्ट के वजह से नहीं होती. प्रोडक्ट तो लेगा ही लेगा, वो आपकी वजह से होती है. आप जब डील कर रहे हो उसको, तो कस्टमर को सुनना बहुत ज़रूरी है, उधर बोलना कम होता है. लेट्स से आप एक एक्स प्रोडक्ट बेचने गए थे, एक्स ना बेच के वाई भी बेच सकते हैं. तो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग दोनों की पॉसिबिलिटी अगर आप इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. AI I would suggest only when you have done a pilot. But I always say that the use case has to be absolutely proven and tested before you start using it. What's the most crucial trait for a successful salesperson? Active listener, persuasive and assertive. That's it. Cool. What's your go-to sales mantra? Bring it on. What's your one word that defines your leadership style? It's a mix of authoritative and democratic. What's the most essential skill for a sales leader? Lead by example. What's the single biggest mistake sales teams make? Not understanding the customer. What's the most powerful word in sales pitch? You. You means when customer is sitting in front, you and you. Nothing else. What's one word that encapsulates a winning sales strategy? Never give up. आपकी तरफ से कुछ युधिष्ठिर सर, कुछ गुरु मंत्र हमारी टीम के लिए? Unlearn, learn, relearn. Do not believe that you know because you've been working on something for years, you know how it is done. Even somebody who is a fresher is well aware, and if they are gifted with analytical approach and logic, I think you should listen to them. Another one is be a student always. Okay, Tata. Bye-bye. Take care.